So hello students, today we are going to discuss topic is rolling motion. Rolling motion on inclined plane. तो सबसे पहले हम एक inclined plane बनाते हैं. This is an inclined plane and this will be the rolling body. It can be anything, it can be ring, this can be disc or sphere or cylinder. It can be anything. हम अभी generalize derivation कर रहे हैं for anything. So I will take the moment of inertia as I. I will taking mass as m and radius as r. Okay, and this is incline plane with inclination angle theta. So ये बात हम जानते हैं कि जो force component of mass into g component of the mg along the inclined plane will be equal to mg sin theta, and component which is perpendicular to the inclined plane will be mg cos theta. यहाँ पे for us mg sin theta is more important because it is creating the translation motion. तो translation motion के लिए जो force responsible है which is mg sin theta. तो I will write translation equation which is nothing but force is equals to ma. Force is equals to ma, F is equals to ma. This is Newton's second law. So net force acting for which is responsible for its translation motion is mg sin theta is equals to mass is m into a. क्या ये इक्वेशन सही लिखी है हमने? यहाँ पे एक गड़बड़ है. By writing this equation we are ignoring one fact. We are ignoring friction. यहाँ पे फ्रिक्शन होना भी जरूरी है. कैसे कैसे फ्रिक्शन भी पिक्चर में आएगा बिकॉज इफ देर इज नो फ्रिक्शन, रोलिंग मोशन के क्वेश्चंस में ये खास स्पेशल पॉइंट है that we have to consider the friction as well, because sometimes without friction rolling is not possible. Rolling is not possible without friction. जैसे in this case देखिए, there is mg and if we take torque of mg sin theta which will pass from center of mass. तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास से ये टॉर्क पास हो रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास, वी आर टेकिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो बताओ इस ऑब्जेक्ट को रोल कौन सा फोर्स करवा रहा है? इसमें एक रोलिंग मोशन हो रहा है, मतलब ये रोटेट भी कर रहा है, यानी एक इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, है ना? तो mg इसको रोलिंग मोशन प्रोवाइड नहीं कर सकता. तो फॉर रोलिंग मोशन यू नीड एन एक्सटर्नल फोर्स जो कि इस केस में फ्रिक्शन होगा जो इसे रोल करवा रहा है, बिकॉज टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर. ये चीज ओके, इज दिस क्लियर? तो ये इक्वेशन लिखना गलत है यहाँ पे. यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड्स और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड्स. तो मैं लिखूंगा m इंटू ए. सो दिस इज आवर इक्वेशन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये मैंने ट्रांसलेशन इक्वेशन लिखी. नाउ आई एम गोइंग टू राइट रोटेशनल इक्वेशन.
फॉर रोटेशनल इक्वेशन अगेन हम नाउ जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए होती है translation equation. Similarly, what will be the rotational equation? Net torque will be equal to mass की जगह क्या आएगा? I. I is moment of inertia. A instead of A, we will write alpha. Alpha is angular acceleration. So these are rotational equivalents. Torque is rotational equivalent of force. Moment of inertia is rotational equivalent of mass, and angular acceleration is rotational equivalent of acceleration, linear acceleration. So force is equals to ma linear equation, and torque is equals to I alpha is रोटेशनल मोशन इक्वेशन. तो यहाँ पे देखिए, अब हमें पता है फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है और ये दिस इज रेडियस एंड दिस इज अल्फा. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा अबाउट सेंटर ऑफ मास. इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट थिंग टू राइट, ऑलवेज राइट टॉर्क इक्वेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास. ठीक है, तो फोर्स इंटू आर ये हो गया. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू आई. अब मैंने बोला कि आई एम लेकिंग इट फॉर जनरल केस, सो आई एम राइटिंग आई. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ हमने एक ट्रांसलेशन इक्वेशन लिख ली, एक रोटेशनल इक्वेशन लिख ली. नाउ वी हैव टू राइट द रिलेशन बिटवीन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन. सो थर्ड पॉइंट विल बी दिस. Relation between translation motion and rotation motion. So जब भी प्योर रोलिंग का केस होता है, in pure rolling bottom most point velocity should be 0. तो इस प्रॉपर्टी को, ये जो पॉइंट है इसको यूज लेके वी हैव derived this value v is equals to omega r in rolling motion. Similarly, we can also write that a is equals to alpha r. बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू को भी जीरो करके we can write like this. So this is our third equation, and this is important thing to keep in mind. A is equals to alpha r. So now you have three equation and three variables. What are the variables? So we have to find the friction F, we have to find the A, and we have to find the alpha. So three variables and three equations. So how can you solve this? So find alpha from this and put it the value in this equation. So हमारे पास equation क्या आएगी? Fr is equals to I A by R. So I got friction is equals to IA by friction is equals to IA by R square. Now put it in equation 1. Put this in equation 1. So you will get mg sin theta minus IA by R square is equals to MA. After rearranging this, we'll get A is equals to mg sin theta डिवाइड बाय, इस वैल्यू को यहाँ पे लेके आएंगे जब हम, तो ये इससे ऐड हो जाएगा. And after adding we will find this value m plus I by r square. ठीक, आप चाहें तो इधर से m भी कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो इक्वेशन विल बी g sin theta upon 1 plus I by mr square. This is the value of acceleration of an body which is rolling on an inclined plane. इसकी वैल्यू आई g sin theta upon 1 plus I by mr square. अगर हम इसे कंपेयर करें
with the sliding motion. Sliding block. तो यू मस्ट हैव रिमेंबर दैट वैल्यू कि अगर कोई ब्लॉक ऐसे हम रखते थे इंक्लाइन प्लेन पे, तो उसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना होता था इफ दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, तो इसका वैल्यू आता था जी साइन थीटा, और इफ देर इज फ्रिक्शन तो वैल्यू आती थी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। जी को कॉमन लिया जा सकता है, तो दिस इज द एक्सेलरेशन व्हेन फ्रिक्शन इज एब्सेंट, एंड दिस इज द एक्सेलरेशन जब फ्रिक्शन होता था। बट ये किसके लिए है? दिस इज इन स्लाइडिंग मोशन। नाउ हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? दिस इज फॉर रोलिंग मोशन। ओके, so we have to keep this formula in mind to solve lots of questions. So for this video we'll stop here, and we'll solve the questions and the further concepts in next video.